Okay, so we just cover according the standard of the questions which are previously asked to you. So we are not going much deeper of the syllabus. I don't think it's much useful for you because the derivations and all other things which incorporate in the HMT is quite difficult as comparative to the bifurcation of the question which you guys are means handled in the paper. तो हम थोड़ा सा इसको इजी ही रखेंगे. Sir, previous year papers are not as that much useful for this exam. If we consider the last paper MR 001, hardly 20%, 15 to not even 15, 10% question from But that previous paper. the standard of the paper means maximum. And the paper this format hello. also very much different, sir. Actually, Okay. sir is not asking about the repetition of the questions. I am Sir, not. I am okay. not asking Sir is repetition. asking about the level of the question paper. Level of the question So actually. I have also seen some other papers. The long derivations. It is not coming in the examination. Long derivation and complex type of the problems are not coming. So and we don't have the enough time to have the long derivations, and long derivations are not important from the examination point of view. So what Pragyan Sir is telling, that is right. The level of question paper is easy. So we will go in that pattern only. Okay, sir. Okay. Okay, so we just start today's lecture. So basically, so in previous class we read this: the conduction heat transfer is a function of is all so Ka del T by del X. This law we have already aware about. So now we just take a second part of the uh, logic. So when we take a plate, okay, so it's a slab or plate, whatever, it is a two-dimensional body. If the heat transfer through this side and the temperature of the inner surface is T1 and outer surface is T2, then the profile across this plate, the temperature profile across this plate is linear. And when we pass heat from the cylinder, okay, so the profile is logarithmic. So the profile is logarithmic. So we just try to prove this, that the profile of the temperature is linear, logarithmic, hyperbolic, parabolic. What kind of profile is followed by the temperature inside the cylindrical surface? Okay, so this is the goal of ours, to find the profile across the slab, across the cylinder, or across the sphere. So we just deal in the mechanical engineering, we just deal the three kind of regular geometry. One is slab, one is cylinder, and other one is sphere. So we just try to derive or explain this through this particular relation. It's a geometrical variation of the temperature. Okay, so यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप, मैं क्या ले रहा हूं. QC equals to K, area of the slab. Okay, so there is the slab profile, and the area is this A. It is a fixed area, and the length across or depth is X. We assume that the profile of the plate
So the area cross section is AX. So these are the area cross section is AX, and dt is a temperature profile or distribution of the temperature is dt, and del x is a distance from the surface x. Okay, so we integrate this all, so that is equals to del x qc, we integrate this, okay, upon minus k ax, here is dt, then integrate from both the side, so qc upon kax, so that is equals to qc upon ka cross section equals to, if the inner temperature is T1 and outer temperature is T2, so T1 minus T2 and QC, and that is equals to X. So integration of dx is X or L. If we integrate from 0 to L, so that is equals to L. So the temperature distribution is linear. Okay, so T1 minus T2 is depend on the length of the surface, so it is a linear function. So temperature distribution across the plate is linear. Sorry to interrupt you, sir, but the upper limit is T2 or T1? Upper limit is if you want to integrate from T inner to T outer, so the integration limit is T inner to T outer. Okay, so integrate it, so T outer minus T inner, Okay. and this T outer minus T inner, if the outer temperature is less and inner temperature is lower than the outer temperature, then it is minus, and this minus and minus is cancelled out. Okay, Okay, sir. Thank you. okay, so we are much more interested in cylindrical surface actually. So now the heat transfer through the cylinder, okay, we use this kind of cylindrical surface for heat transfer. Heat transfer from inner to outer, we assume that heat is transferred from inner to outer surface. Just a minute. Okay, we take a cylinder and transferring heat from inner to outer surface, and we draw the profile of the temperature of the cylindrical wall. Okay, so K equals QC equals to minus K area cross section if the cylinder is 2 pi r L. Let us assume that radius is r, L is the length of the cylinder. Okay, so the circumferential area is 2 pi rl. There's the problem. Are you guys having any problem to take this area? Any objection? Any issue? No, sir. The circumferential area of the heat transfer is 2 pi rl, and del T upon del R, because we
find the distribution across the radius. So del T by del X is converted into del T by del R because we want to take across the radius, the heat transfer across the radius. So the QC equals to minus K 2 pi RL del T by del R. So we just try to find out the thermal profile or temperature profile. Take the inner temperature is Ti and outer temperature is To of the wall. So we integrate this across the surface. So QC. Okay, so QC is a constant, basically QC, and del R by R, del R by R equals to, or better to write, 2 pi R L del T upon, or del T equals to this, and K is also in the denominator, and the temperature is T inner to T outer. Okay, केवल मैं डेल टी यहां छोड़ रहा हूं, बाकी सब चीजें मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूं फॉर मैथमेटिकल ईज. यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं. सो क्यू सी अपॉन 2 पाई के एल ब्रैकेट के बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल आर बाई आर, where we integrate from R inner to R outer, that is equals to T inner to T outer del T. ओके, इसको सॉल्व करेंगे. सो ये क्यू सी अपॉन 2 पाई के एल एल एन ऑफ आर आउटर अपॉन आर इनर इक्वल्स टू T outer minus T inner. So the temperature distribution is logarithmic profiling. Okay, the distribution of the temperature is logarithmic across the cylindrical surface. कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार देखिए. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir, there is no problem. You can continue. Okay, so when we convert this into electrical network type of system, then this is the potential difference. So for cylinder, the QC equals to delta T upon 1 upon 2 pi KL ln of R outer upon R inner. So for cylindrical surface, the resistance of the heat transfer flow is equals to 2 pi R L ln of, or 2 pi KL, sorry, ln of R outer upon R inner. Okay, for plate, resistance across the surface equals to delta upon Ka, and for cylinder, this resistance equals to 1 upon 2 pi KL ln of R to R outer upon R inner. ठीक है. Same in case of sphere. Same in case of sphere. Okay, देखिए क्या कर रहे हैं हम. QC equals to minus K. Area of the sphere is 4 pi R square
del t by del x। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हम स्फेयर के थ्रू हीट ट्रांसफर ले रहे हैं तो हीट ट्रांसफर जो है वो अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्फेयर होगा। सो एरिया ऑफ द स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो integrate it as a same manner. So we integrate it. So del t, t inner to t outer equals to, because we are interested to find the temperature profile of the distribution, so that is equals to r inner to r outer, okay, qc upon 4 pi r square into k। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, माइनस साइन यूज कर रहा हूं मैं। इज इट ओके फॉर यू? Yes, sir. Okay, so that is equals to T outer minus T inner, means the distribution of the temperature from outer wall to inner wall, that is equals to, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे सो 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, सो 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको, सो क्यू सी अपॉन 4 पाई के, दैट इज इक्वल्स टू, that is equals to 1 upon r minus, okay, 1 upon r square, we want to integrate it, so that is equals to 1 upon r, it is r outer to r inner to r outer, इसको आप सॉल्व करेंगे, so qc equals to 4 pi k 1 minus r outer minus 1 upon r inner, सॉल्व करेंगे तो r inner minus r outer upon r outer r inner, आपको ये नीचे मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज एक्चुअली अ ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशन और हाइपरबोलिक प्रोफाइल ऑफ द इक्वेशन। सो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द स्फीयर, अगर आप इसे लिखना चाहेंगे तो ये आएगा 1 upon 4 pi r outer r inner, r outer minus r inner to k। So r outer up minus r inner upon 4 pi r0 r I k। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि प्रोफाइलिंग क्या है, और ये बेसिकली एक हाइपरबोलिक प्रोफाइल है। अगर हम एरिया ज्योमेट्री के हिसाब से देखेंगे तो ये एरिया जो है ये ज्योमेट्रिकल मीन होता है, ज्योमेट्रिकल मीन होता है, ये लॉगरिथमिक मीन होता है, और ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आपका प्लेट की बात करते हैं, सो प्लेट के लिए थर्मल रेजिस्टेंस, so the resistance delta upon k for plate, resistance for cylinder equals to 1 upon 2 pi kl ln of r2 by r1, or whatever you denote inner to outer radius, and for sphere that is equals to 1 upon 4 pi k r inner r outer minus r inner। So these are the distribution, these are the resistance, and the distribution is linear, logarithmic and parabolic।
So the resistance for the plate equals to delta upon Ka. Okay, the resistance for the cylindrical wall equals to 1 upon 2 pi KL ln of R outer upon R inner. Okay, and the resistance for the spherical body is R outer upon R inner upon 4 pi K R outer R inner. ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशंस क्लियर होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि अक्रॉस द वॉल टेम्परेचर जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. अक्रॉस द वॉल टेम्परेचर जो है वो लॉगरिथमिक लॉग प्लॉट होता है, लीनियर होता है. एंड फॉर स्फीयर it is hyperbolic. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी हल्की सी. आप एक बार देख लीजिए, यू जस्ट गो थ्रू योर सिलेबस. So these are the basic distribution for three different geometry. So we have encountered the three different geometry. One is slab, one is cylinder, and other one is sphere. Depend on the conditions. अब मैं थर्ड पार्ट पे आ रहा हूं. So now we come to the convection heat transfer. Okay, so heat transfer through the convection is proportional to the surface area. Okay, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे आप तो हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो जाएगा. सो द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया. इफ द सरफेस एरिया इंक्रीजेस then the heat transfer through the convection increases. That's why we use fin and other different aspect of heat transfer having a more surface area. आप दूसरा मैं लिख रहा हूं, convective heat transfer is proportional to temperature difference of the body. So surface temperature जो है, let assume that the surface temperature of the body is Ts and the environment temperature is T infinity. If the heat transfer is more when the environmental temperature is less. So if this temperature difference is more, then the convective heat transfer is more. Okay, so these two correlation, when we combined it, so convective heat transfer is proportional to the surface area as well as the temperature difference. Okay, and the proportionality constant is known as convective heat transfer coefficient. So Q convection, so the Q convection equals to H, where H is proportionality constant for the convection, H A surface into delta T.
So this relation is known as the convective heat transfer correlation. Okay, so Sir, what is H? H is convective heat transfer coefficient. H is equals to convective heat transfer coefficient. H equals to convective heat transfer coefficient. It's depend on convective heat transfer coefficient is depend on actually the velocities, the density, and the viscosity of the substance basically. Okay, as the velocity increases, the convective heat transfer coefficient increases. As the density increases or decreases, the convective heat transfer coefficient changes. Okay, so it's a complicated phenomena जो कि हम आपकी थर्ड यूनिट जो होगी फोर्स और फ्री हीट ट्रांसफर उसमें हम इसको निकालना सीखेंगे. So at present convective heat transfer is a function of, so the convection, just a minute. So the convective heat transfer is equals to HA. A is actually a surface area, so AS delta T. It is the absolute value of heat transfer. आप इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं AS delta T. इसे हम HAS T surface upon T environment भी लिख सकते हैं. Okay, so this is the convective heat transfer law, where the convective heat transfer is proportional to cross sectional area. Convective heat transfer is proportional to change in temperature, and the proportionality constant is known as convective heat transfer coefficient. आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से. सो Q की यूनिट होती है वॉट, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन. सो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है इसकी यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. कोई दिक्कत? No, sir. Actually, we are having a constraint to cover our course in hardly 10 hours. Okay, so मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है. थोड़ा सा डाइसी है. 40 घंटे का सिलेबस है वैसे ही, और इसको हम थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे. ओके, तो मैं कंपैरिजन करूंगा अभी सारे लॉस का एक साथ. मैं थर्ड लॉ की बात कर रहा हूं बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से. तो ये कन्वेक्शन हो गया. ओके, कन्वेक्शन में भी हम तीनों ज्योमेट्रीज को ले सकते हैं. सो थोड़ा सा उसको भी मैं कवर कर लेता हूं. सो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर फॉर प्लेट. ओके, सो हियर इज द dimension of plate. If the flow is from the upper surface, if the dimensions are A and B and the height is T, so convective heat transfer अगर आपका ऊपर से flow हो रहा है, so H A into B, that is equals to H into A surface into T surface. Let us assume that temperature of the surface is Ts and the temperature of environment T infinity. So this is the quantity of heat transfer for
plate or slab. Now we take in place of plate, if we have a cylinder, then this heat transfer equals to H. In place of this, we take a circumferential surface area, so that is equals to 2 pi r into L T s minus T infinity. Okay, where L is the length of the tube and r is the radius of the tube. And in place of sphere, this is equals to 4 pi r square T s minus T infinity. ठीक है, ये स्फेयर का केस होगा, ये सिलेंडर का केस होगा और ये स्लैब का केस होगा. कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम सिंपल है, कहीं कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. थर्ड लॉ, जिसे आप स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है, वो रेडिएशन के लिए होता है. तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ फोटॉन ट्रांसफर. सो change in energy or energy transferred in heat in radiation, that is equals to mc square, where m is a mass of photons and c is velocity of electromagnetic waves. Okay, so in radiation, heat transfer is basically depend on the mass. It's a quantum package or mass of the photon, and c is velocity of the electromagnetic wave. So इस फॉर्म में आपकी हीट ट्रांसफर होती है. ओके, सो फॉर रेडिएशन देयर इज द नो नीड ऑफ मीडिया. इन वैक्यूम amount of radiation is more as comparative to the dense media, as comparative to cloudy environment. तो ये आपको दिमाग में रखना है. बाकी आपको हर मीडियम में रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको सराउंडिंग्स रिक्वायरमेंट रहेंगी. अगर आपको कन्वेक्शन करना है तो आपको वेलोसिटी ऑफ विंड्स रहेंगी, आपको फ्लूइड रहेगा. कंडक्शन करना है तो इन बिटवीन द मेटल्स होंगी, ऑसिलेशन फिनोमिना पिक्चर में रहेगा. यहां कन्वेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से कम वेलोसिटी और 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी, दो फिलॉसफीज हमने पढ़ी हुई हैं. रेडिएशन में हीट ट्रांसफर थ्रू द रेडिएशन इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ और प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ T power 4. ओके, सो इन रेडिएशन heat transfer is proportional to the fourth power of temperature. इस proportionality constant को, so the proportionality constant is known as, इसमें और कुछ एरिया और कोई किसी तरह की फिलॉसफी इन्वॉल्व नहीं रहती है. So radiation heat transfer is proportional to T power 4 and the proportionality constant is known as Stephen Boltzmann constant. Okay, so इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं. कोई दिक्कत तो नहीं. सो इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू T power 4 and the constant is known as Stephen Boltzmann constant. And the value of Stephen Boltzmann constant is 5.67 into 10 to the power minus 8. Sir, please Huh? drag the bar
बार को सर थोड़ा सा पकड़ के हिला, नहीं इधर, हाँ बस, थैंक यू सर, Okay. नाउ वी कैन एबल, ओके थैंक यू सर। Okay, so it's a Stephen. This constant is known as the Stephen Boltzmann constant, and the value of the Stephen Boltzmann constant is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per Kelvin power 4. ओके, सो दैट्स वाई हमको टेम्परेचर जो है उनमें बहुत हाई डिफरेंस चाहिए होता है जब हम रेडिएशन की बात करते हैं। तो ये बेसिकली तीन आपके डिफरेंट फॉर्म है। मैं अब तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं चीजों को ताकि आपको एक बार मैं क्लियर करूं कुछ पैचेस को। ओके, सो heat transfer is basically we have a three mode of heat transfer. One is conduction, second one is convection, and third one is radiation. Okay, conduction is basically depend of the oscillation of the particles. Particles don't leave their place, they just vibrate, they just transfer their energy in the form of oscillation to one particle to the another particle, and they transfer their heat from one part to another through the vibrating energy. Okay, so the heat transfer through the conduction is proportionality of area cross section and thermal gradient. Okay, and the proportionality constant is known as thermal conductivity. So the proportionality constant is known as conductivity heat transfer coefficient. Okay, second one is convection. When it convection is also depend on two different bifurcation of the convection. One is free convection and one is force. When the velocity of the air or a fluid is less than 10 meter per second, then this phenomena is comes under the category of free convection. And when the velocity of the substance or a fluid is less greater than 10 meter per second, then it comes under the category of force convection. Okay, and in both the convection phenomena, heat transfer is a function of this. So this constant is known as convective heat transfer coefficient. Convective heat transfer coefficient, that is conductive heat transfer coefficient. And the radiation energy transfer in the form of photons, and the total energy transfer is, so the radiative heat transfer equals to sigma T to the power 4, where sigma is known as Stephen Boltzmann constant, and its value is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per Kelvin power 4.
unit of H is watt per meter square Kelvin, and unit of K is watt per meter Kelvin. ठीक है. So these are the three different modes of heat transfer. Conduction, where the medium required, as the density improves, as the density increases, the conductive heat transfer increases. डायमंड का कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेरेटिव टू एयर के. कन्वेक्शन, फ्री ऑफ फोर्स कन्वेक्शन डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस. कंडक्टिव हीट ट्रांसफर जो है वो सरफेस फिनोमिना है. QC इक्वल्स टू KAS डेल्टा टी. रेडिएशन जो है वो आपका सिंपल है. रेडिएटिव हीट ट्रांसफर is actually proportionate to, so Q, radiative heat transfer, is proportional to T to the power 4, and the proportionality constant is known as Stephen-Boltzmann constant. तो ये आपके बेसिक फिनोमिना है. मैं तीनों ही सिस्टम को सर. हाँ जी. Okay. Okay, sir, you are concluding. Today we have a great session. One of my requests is that, sir, while teaching, you are using the paintbrush. हाँ हाँ. If you use Word file, then at the end we can share this Word file. Word file can be scrolled, and we can also convert in PDF and we can share in the group. So automatically notes will be prepared by this way. नेक्स्ट क्लास से कर दूंगा सर मैं. हाँ, एक्चुअली नेक्स्ट क्लास. हाँ, वर्ड में शायद इसमें कंपेटेबल नहीं है. मैं देखूंगा अगर वर्ड में कंपेटेबल अच्छा. सिस्टम मिल गया मेरे को जी तो जी 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 सर. ठीक है ना. और हम लोग ये चाहते हैं सर कि जो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, हाँ हाँ, वो मैं कराता जाऊँ. कन्वेक्शन लाइक कंपोजिट सिस्टम एंड अदर, तो वो न्यूमेरिकल जरूर सर हम लोगों को करा दीजिए. बिल्कुल करा दूंगा मैं. ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ओके ओके. तो ये आपका हुआ छोटा सा पैच, और मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूं. 1 मिनट में लगेगा मेरे को. तो मैं सारे सिस्टम को रजिस्टिव सिस्टम में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं. सो Q कंडक्शन इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन KA, where delta upon KA is resistance of the system for slab, cylinder. Delta T upon 1 upon 2 pi KL ln of R outer upon R inner, where resistance for the cylinder equals to 1 upon 2 pi KL ln of R outer upon R inner. Okay. And the third phenomena is Q sphere, where temperature difference equals to R outer upon R inner upon 4 pi K R inner R outer. So resistance for spherical system, that is equals to R outer upon R inner upon 4 pi K R outer R inner. तो ये आपको दिमाग में रखना है. इतने में आपके सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो हम डील कर ले जाएंगे. ठीक है. तो मैं आपको थोड़ा सा आपके कुछ न्यूमेरिकल्स पे, अभी समय है तो हम चल सकते हैं. मैं आपको यस सर, यस सर, एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा. यस.
यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, थ्योरी है, आप उसको हम कर चुके हैं ऑलरेडी. व्हाट इज द वेरियस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, एक्सप्लेन देयर डिफरेंसेस. तो आपको तीनों हीट ट्रांसफर फिनोमिना और इनके बेसिक डिफरेंस बताने हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम. और उस तरह से हम हीट ट्रांसफर फिनोमिना और बेसिक फॉर्मुलेशन की बात करेंगे. स्टेट द फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर का आपको लॉ एक्सप्लेन करना है. ठीक है, हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. एयर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लो ओवर अ हॉट प्लेट whose dimension is 50 centimeter cross 75 centimeter maintained at 200 degree centigrade with the help of electric heater. The convective coefficient is 20 watt per meter square. Calculate the heat transfer. Okay? क्वेश्चन आपको दिख रहा है? Yes, sir. ओके, सो हम यहां पे देखिए, हम इसको क्वेश्चन को चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको. मुझे 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए. ओके, सो एक्चुअली देयर इज द स्लैब ऑफ 50 क्रॉस 75 centimeter. Okay, there's the slab of 50 cross Whatever you are writing is not visible, sir. just a minute. Okay, we have a slab of 75 centimeter cross 50 centimeter. Its upper surface is like that. जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40 and 200. Okay, so this surface is maintained at 200 degrees centigrade and the fluid having a temperature of 40 degrees centigrade. So temperature of the fluid is 40 degrees centigrade. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है एच सी इक्वल्स टू 20 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है आपको. ठीक है, ये आपकी एनालॉजी ऑफ द क्वेश्चन होता है. कई बार क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो आप एनालॉजी आप बनाना क्वेश्चन की सीखिए. सो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इक्वल्स टू एच ए डेल्टा टी है. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू एच आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 20. ठीक है, यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको हर यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा. एरिया क्रॉस सेक्शन आपका है 50 10 to the power -2, क्योंकि सेंटीमीटर में है मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 75 इंटू 10 to the power -2 मल्टीप्लाइड बाय 200 -40. आप यहां केल्विन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, या किसी और मोड में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंसेस है. ओके, तो जो भी आप निकालेंगे वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा. सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. देखिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या इसमें आपको?
सर कोई यूनिट नहीं होगा इसका सर? यूनिट वॉट में आएगा हीट? आप यूनिट लिखना चाहते हैं, आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहां पे मीटर स्क्वायर इनटू एरिया में है, टेम्परेचर डिफरेंट डिग्री सेंटीग्रेड में है। आप सॉल्व करेंगे, ये डिग्री सेंटीग्रेड जो है आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? क्यूसी वॉट में आएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो सिलेबस में है। आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, कंडक्शन का, मैं रेडिएशन अभी नहीं रख रहा हूं। आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, शो द फोरियर लॉ एंड ओम्स लॉ आर सिमिलर। तो आपको फोरियर लॉ और ओम लॉ को सिमिलरिटी उसमें शो करनी है। सो हम Q को, हीट को मैप करेंगे करंट से, ठीक है, और रेजिस्टेंस फिलॉसफी डेल्टा अपॉन के को मैप करेंगे। आपको यहां पे 3 लेयर्स दी हुई हैं और सीरीज और पैरेलल की फिलॉसफी को एक्सप्लेन करना है। यहां बन जाएगा ये क्वेश्चन। यस सर, हो जाएगा। ये सर आपने कल कराया था R1 R2 R3 सीरीज में। ठीक है, आप बोलेंगे मैं 1 मिनट में इसको एक बार और करना है तो हम कर लेते हैं। एक मेरे बार को और करा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे। हमारे पास 2 तरह से सिस्टम है यहाँ पे। ओके, पहला है सीरीज सिस्टम, जहां पे K1 L1 K2 L2 K3 L3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो लेंथ अक्रॉस है। और अगर मैं इसका यहाँ पे नेटवर्क सीरीज में ड्रॉ करता हूं, सो डेल्टा अपॉन K1 A1 डेल्टा अपॉन K2 A2, जहां पे एरिया जो है अगर इनका सबका सेम है तो ये एरिया सेम रहेगा, अदरवाइज K3 A3। डेल्टा जो है इसमें लेंथ L1 L2 L3 अलग अलग है, तो L1 ले लीजिएगा, यहाँ L2 ले लीजिएगा, यहाँ L3 ले लीजिएगा। तो L1 अपॉन K1 A1, L2 अपॉन K2 A2, L3 अपॉन K3 A3। सो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, so that is equals to L1 upon K1 A1, L2 upon K2 A2, L3 upon K3 A3। ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो टोटल हीट ट्रांसफर, अगर यहाँ का टेम्परेचर T इनर और यहाँ का टेम्परेचर T आउटर है, सो टोटल हीट ट्रांसफर थ्रू द कंडक्शन इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन समेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेलल, सॉरी सीरीज। अब अगर आपके ये हीट जो है वो ऐसे 3 स्लैब्स में से फ्लो हो रही है, ये एक साथ जुड़े हुए हैं और यहां से हीट आ रही है Q और इसके थ्रू फ्लो हो रही है, तो यहां आपका ये नेटवर्क जो है वो ऐसा बनेगा। इधर का टेम्परेचर T इनर, इधर का टेम्परेचर T आउटर है। आप बहुत आसानी से ये इसकी लेंथ जो है वो, अगर आप डेल्टा डिफाइन कर रहे हैं, डेल्टा अपॉन के ए, यहाँ पे ए जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये वाला एरिया। सो इसको मैं ए क्रॉस सेक्शन कह रहा हूं, तो आप यहाँ पे डेल्टा 1 अपॉन K1 A1, डेल्टा 2 अपॉन K2 A2, डेल्टा 3 अपॉन K3 A3। और आप इसको जब यूज करेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा, सो 1 अपॉन रेजिस्टेंस टोटल इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। सीरीज में ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद R टोटल निकाल लीजिएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। सो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू डेल्टा टेम्परेचर अपॉन समेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपको जो सेकंड क्वेश्चन आपको पेपर में दिया हुआ है, ये उसको बताने का तरीका है। उसके बाद फर्नेस पे बेस क्वेश्चन है ये शायद लॉन्ग फिन का क्वेश्चन दिख रहा है, लॉन्ग रॉड। अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने जो अभी क्वेश्चन करे हैं उनमें से ये क्वेश्चन 5 मिनट के क्वेश्चन है आपके, 15-20 नंबर के। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में अब कुछ क्वेश्चंस ही लेंगे। तो अगली क्लास में हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों के बेसिक फंडामेंटल। प्रीवियस पेज पे एक बार दिखाइए ना सर, स्क्रीनशॉट लेना है सर। प्रीवियस पेज, हाँ ये लीजिए। यस सर, ये वाला। सर इसके प्रीवियस वाला दिखाइएगा सर, जहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। उसका प्रीवियस वाला मैं फिर से कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बेसिकली उस क्वेश्चन में ये अलग कर दूं मैं। हाँ यस सर, ये हो गया। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका एक स्लैब है, इस स्लैब का सरफेस एरिया जो है वो 50 सेंटीमीटर क्रॉस 75 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। यहां से एक एयर आ रही है और इस स्लैब को ठंडा करने की कोशिश कर रही है। वेयर द टेम्परेचर ऑफ द स्लैब, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक हीटर से जुड़ा हुआ है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और जो विंड है, जो फ्लूइड है, उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक है सर। एंड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, जो फ्लूइड है, जो एयर फ्लो हो रही है, सो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द एयर इज 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर, एक वैल्यू इसमें मिसिंग है, पर डिग्री सेंटीग्रेड देना चाहिए था इसको, पर ठीक है। तो क्वेश्चन उतना मैच्योर नहीं है, पर ठीक है, चल जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू एच ए सरफेस इंटू डेल्टा टी होता है। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शन, and the convective heat transfer is also proportional to change in temperature, and the proportionality constant is known as heat transfer coefficient. तो ये आपने लिख दिया। तो ये आपका लॉ है कन्वेक्शन का। इसमें से हमको H की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन, आपको सरफेस एरिया कितना मिल जाएगा, एकदम सिंपल है, 50 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी एक यूनिट नीचे डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर चल रहा है ये, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। सो 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 75 इंटू 10 टू द पावर -2, दोनों यूनिट मीटर स्क्वायर में आ चुकी है, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 200 माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यूनिट आप यहां लिखना चाहते हैं लिखें, ना लिखना चाहते हैं ना लिखें। और फाइनली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 50 इंटू 75 इंटू 160 इंटू 10 टू द पावर -4। मैंने ये दोनों 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई करके बाहर 10 टू द पावर -4 लिख दिया है। वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड आना चाहिए, पर अभी आप वॉट लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि आप हीट को जो है वो वॉट में ही लिखेंगे। सर ये लीनियर है ना सर?
पार्डन? सर ये लीनियर है ना सर, लीनियर ये कन्वेक्शन। नहीं, ये अपन कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं। कन्वेक्शन में लीनियर और किसी तरह का कोई प्रोफाइल नहीं बनता है। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर में कोई प्रोफाइल नहीं बनता है। हमने जो प्रोफाइलिंग पढ़ी है वो प्रोफाइलिंग पढ़ी है कंडक्शन में। ओके ओके सर, ओके। ओके, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कन्वेक्शन। Wait minute, sir. Wait. ठीक है, Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Yes, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you very much, sir. Good night, sir. गुड नाइट। Thank you. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir.